Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video we'll share all the perfumes that are similar or alternatives to Bonanza Enchant. So stay with me till the end of the video, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. So let's move on to the video. So as you guys know कि Bonanza Enchant is one of my most favorite perfumes and मसला ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि इट इज़ मोर ओरिएंटल मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंस और कुछ लोगों को लगता है कि इट्स वेरी हैवी एंड इट गिव्स सम पीपल हेडेक्स इंक्लूडिंग माय सिस्टर. सो आई थॉट लेट्स शेयर विद यू गाइज द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ Bonanza Enchant and you must have one of these in your perfume collection. I really recommend buying any of these fragrances and include it in your perfumes collection because I think it's a great fragrance. For me, it's a great fragrance and I really like and love it. Let's move on to the list of fragrances which I think are similar to Enchant. So the first one is J.Uroosa. Uroosa और Bonanza Enchant की जो notes हैं I'll write here in the video side by side so you can see. So you guys, let me tell you कि इसकी जो notes हैं they are very different but it is very similar. It is the most similar of all the perfumes which I am going to share with you guys with the Bonanza Enchant, but it lacks that oriental touch from Bonanza Enchant. और जो उसमें जो रोजीनेस है ना, रोज़ की जो इफ़ेक्ट है वो Enchant में काफ़ी ज़्यादा है जो कि इसमें नहीं है Uroosa में. As you guys can see, जो ओनली जो इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं नोट्स में अगर हम देखें तो वो है पचीली और सैंडलवुड की. एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच मेक इट सिमिलर टू द Bonanza Enchant. अगर हम बाइफिकेट करके देखें तो Bonanza Enchant की जो टॉप नोट्स हैं वो फ्रूटी हैं. इट हैज़ मैंडरीन एंड बर्गमॉट. सो इसमें जो है वो एप्पल है, ब्लैक करंट है एंड गार्डनिया है. सो इट इज़ काइंड ऑफ फ्रूटी एंड फ्लोरल. देन अगर हम इसमें देखें तो मिडिल नोट्स में कुछ फ्लोरल्स हैं लाइक गार्डनिया, फ्रेजिया, जैस्मिन. सो अगेन हमारे पास जो Bonanza Enchant है इट हैज़ रोज़ इन इट. So I think that's the only thing missing from here, the rose fragrance, because it has floral factor but it is not rosy. ठीक है, this is the only difference. And then in the base notes there are patchouli and sandalwood which are in here, and there's no musk in here written down but I think there is musk in here. और vanilla है इसमें. तो वैसे भी Bonanza Enchant जो है, as you guys know कि मैंने आप लोगों को बताया कि it is a very sweet fragrance, so I think vanilla इसमें है तो it doesn't make any difference because Bonanza Enchant is also very sweet and I think there is vanilla in it too which is not listed down. अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बता दूं कि जो J.Uroosa है इट इज़ 50 ml परफ्यूम एंड इट इज़ 2300 रुपीज़ विच इज़ क्वाइट अ लॉट फॉर अ 50 ml परफ्यूम, बट अगेन व्हेन इट इज़ ऑन सेल इट इज़ फॉर अराउंड 1600 और 1800 रुपीज़. सो आई गेस अगर जैसे ये सेल पे आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज़ कि आप इसका 50 ml ट्राई कर सकें एंड गेट योर सेल्फ फेमिलियर विद द Bonanza Enchant फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी गुड. So the next fragrance which we'll discuss is Beechtree Bloom perfume. अच्छा, Beechtree Bloom perfume की जो notes हैं they are more similar to J.Uroosa than they are similar to Bonanza Enchant. So you can see there is apple in it too, there is blackcurrant again, and there's bergamot, which is because there is bergamot in Enchant also, so this is the similarity. And there's tangerine और mandarin, orange हैं, दोनों types of oranges हैं तो Bonanza Enchant से एक और similarity है. Then in the middle notes it have again florals which are freesia, gardenia, jasmine and lily of the valley and magnolia. So they are more similar notes with the J.Uroosa than Bonanza Enchant. Again this one is missing the rose factor again here. It is floral but it misses the rose. And then in the base notes which are very similar, they are musk, patchouli, sandalwood and vanilla. So इसकी जो base notes हैं they are more similar to Bonanza Enchant. जो इस वाले की base notes हैं वो बहुत ज़्यादा similar हैं, but the fact that it is not similar to Bonanza Enchant is that it is more of a fresh floral because it has gardenia, it has lily of the valley, it has jasmine, and it also has magnolia which makes it more aquatic-y floral type, which makes it more of a watery kind of floral fragrance. So this one lacks the rose factor and it also adds some kind of different floral factor which is magnolia factor, which is aquatic floral factor.
आई थिंक जिन लोगों को बोनेंजा इंचांट की हैवीनेस और वुडीनेस और जो ओरिएंटल मिडल ईस्टर्न इफेक्ट है वो पसंद नहीं है, उनको ये वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज इट हैज़ द सेम बेस नोट्स बट जो इसकी फ्लोरल्स हैं दे आर वेरी फ्रेश एंड लाइट. तो आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट फ्रॉम द होल Beechtree परफ्यूम्स रेंज एंड आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस. इसकी जो प्राइस है वो है 2989, अराउंड 3000 रुपीज़, विच इज़ सिमिलर टू Bonanza Enchant. सो इट्स जस्ट लाइक कि जिसको Bonanza Enchant की फ्रेग्रेंस पसंद है बट वो हैवीनेस इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, दे कैन गो फॉर दिस फ्रेग्रेंस इंस्टेड ऑफ Enchant. The next fragrance which we'll discuss here is Maria B M Girl. Okay, इसकी जो notes हैं वो website पर mention नहीं है, but believe me it is very similar to Bonanza Enchant. But the only difference between M Girl and Enchant is that of the sweetness. It is not sweet at all. जबकि जो Bonanza Enchant है it is very sweet as I've already told you guys. और it is more ambery. This one is also ambery, okay, and it is very heavy on the woods. It is more woody than Bonanza Enchant. So it is very heavy on the sandalwoods. तो जो इसकी base notes हैं वो very similar. They are very similar to Bonanza Enchant. It is more of a floral woody fragrance with sandalwood and musk and एम्बर आई गेस. सो जिन लोगों को इंचैंट की स्वीटनेस बॉदर करती है बट दे लव सैंडलवुड, मस्क एंड patchouli and amber kind of effect with some florals, they can go with M Girl, and this is more woody than Bonanza Enchant. So I really love this fragrance also. So the last one which we'll discuss here is Sapphire's Bella fragrance. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमेशा से मैं कहती रही हूँ सफ़ायर की बेला फ्रेग्रेंस बहुत पुरानी है और इनकी फ़र्स्ट कलेक्शन में से है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू Bonanza Enchant. बिकॉज मैं इधर नोट्स मेंशन कर दूँगी, यू गाइस कैन सी इट हैज़ पेयर, टॉप नोट्स में पेयर, टैंजरीन, ब्लैक करंट एंड bergamot. सो अगेन bergamot and tangerine are the two notes which are similar to Bonanza Enchant in the top notes. Then in the middle notes it has orange blossom, jasmine and rose. So it has the rose factor also, so it is also very similar to Bonanza Enchant. It has jasmine and orange blossom, so it has some white florals and the जो कि रेजिन फ्रेग्रेंस है ना Bonanza Enchant में, रेजिन एज इन दी वार्म एम्बर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. येलो प्लास्टिक को आप इमेजिन करें, ये येलो स्टोन को आप इमेजिन करें, दैट काइंड ऑफ जो फ्रेग्रेंस है, जो टेंगी जो कि फ्रेग्रेंस होती है ना, खट्टी फ्रेग्रेंस, जो टॉफ़ी लाइक फ्रेग्रेंस हो, टॉफ़ी एज इन जो कैंडी लाइक हो, स्वीट एंड sour kind of fragrance, वो fragrance I think comes from orange blossom here. And then in the base notes again sandalwood, amber and patchouli, which are very similar to Bonanza Enchant. So this one is also very similar to Bonanza Enchant. So you guys, if you have paid attention you would notice कि इन सब में एक सिमिलैरिटी है. वो सिमिलैरिटी है जो कि नोट इन सारी फ्रेगरेंस में मुझे मिली है. बहुत सारी नोट्स ऐसी थी जो उसमें नहीं थी, किसी में थी, किसी में नहीं थी, ज़्यादातर फ्रेगरेंसेस में बल्कि सब में ही देयर वाज सैंडलवुड. सो आई थिंक द बेस नोट ऑफ Bonanza Enchant विच गिव्स इट द यूनिक फ्रेगरेंस, क्योंकि आई थिंक मैंने और कोई सैंडलवुड फ्रेगरेंस के बारे में डिस्कस किया नहीं है. सो आई थिंक इट्स द सैंडलवुड विच इज़ मेकिंग ऑल ऑफ देम सिमिलर, and most of these fragrances also have patchouli. So I think it's the combination of patchouli and sandalwood. I forgot to mention the price of Sapphire Bella, which is again 2990, which is similar to Bonanza Enchant and Beechtree Bloom. So अगर आप लोगों ने try out करना है, so you should first get J.Uroosa because you can get it on discount. And जैसे ही J. पे सेल लगती है, you guys don't forget that J.Uroosa is similar to Enchant, और वो 1800-1700 तक का आपको मिल जाएगा. So I think go for that. और बाकी मैंने जो डिफरेंसेस थे या जो सिमिलैरिटीज़ थी वो आपको बता दी हैं. जिन लोगों को इंचैंट का जो मिडल ईस्टर्न इफेक्ट है वो नहीं पसंद, दे कैन गो फॉर ब्लूम विच इज़ अ वेरी गुड alternative, and also Sapphire Bella. So you guys, I think that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel. Let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. Thanks for watching. Bye.